Now two parallel rails, and these rails are distant at a, how much they are? This is one parallel rail, this is one rail, okay, this is another rail. How these rails are laid? The question says they are laid in north south direction. Question क्या कह रहा है कि कैसे रखे हुए हैं? They are laid in north south direction, and on these rail is kept a metal cylinder. तो इसके ऊपर तुमने क्या किया? एक मेटल सिलेंडर को रख दिया. तो मैं मान लेता हूं ये कोई एक मेटल सिलेंडर है जिसको आपने ऐसे प्लेस कर दिया इस रेल के ऊपर, ठीक है. और जब इस मेटल सिलेंडर को तुमने प्लेस किया इस जगह पे रखा हुआ है, और फिर कह रहा है अब बैटरी इज कनेक्टेड टू द रेल्स विथ इट्स पॉजिटिव टर्मिनल ज्वाइन टू द रेल ऑन द ईस्टर्न साइड. अगर नॉर्थ साउथ ये है तो ईस्ट इसे कहेंगे. तो ये जो ईस्ट साइड का है, ईस्ट साइड को किससे ज्वाइन कर दिया तुमने? एक पॉजिटिव टर्मिनल से. तो ये यहां पे ऐसे मैं बैटरी का सेट लगा देता हूं और इस वाले पे ये पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ देता हूं, ठीक. तो करंट यहां से यूं चलते हुए आएगी, इससे होते हुए फिर ये चूंकि मेटल का सिलेंडर तो करंट इससे पास करेगी और फिर ऐसे होते हुए इधर से इधर आ जाएगी. क्या इतनी बात सबको समझ में आ गया? डायग्राम समझ में आ गया? सो व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन दीज आर टू रेल्स. What type of two rails are there? These are two parallel rails. How are they aligned? These two rails are aligned in the north-south direction. On this rail, what is happening? There is a cylinder that has been kept. What is the mass of the cylinder? That is 4 into 10 to the power of minus 2 kg. अब देखो ये जो सिलेंडर का वेट है वो किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा? इस डायग्राम के हिसाब से मुझे चाहिए. जो डायग्राम मैंने कॉपी में ड्रॉ किया हुआ है, इसमें वेट किधर की तरफ एक्ट करेगा? ये ऐसे कि इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर, इनसाइड द प्लेन ऑफ द पेपर. बिकॉज सी करंट I, and what is the value of current I? That is 3 ampere. So the battery sends a current of 3 ampere in the cylinder, and the magnetic field कितना है? 1.2 टेस्ला डायरेक्टेड upward. Magnetic field किधर की तरफ लग रहा है? It is directed upwards. Be there. Then find out the direction of the magnetic force imposed on the cylinder, and then also find the acceleration in the cylinder. How much distance they are apart? The question says the distance between the two rails are 2 into 10 to the power of minus 2 meters. So that is what the setup of the problem all looks like. Now there is a problem, let me just explain to you first with the English part of Nootan physics. The question says, if a uniform magnetic field is directed upward. Many a times I have told you, Nootan physics does not understand one simple language, upwards and outwards. Is that clear? Here they probably want to say outwards the plane, that is dot and a circle. So I'm just assuming that what I'm assuming is correct. So 1.2 Tesla, this is the type the magnetic field is. Then only the problem can be solved. So let's look into the problem. Force is equals to ILB sin theta. What is the direction of, what is the angle between the current element? Do you remember what was the current element? In what direction the current element is? Sir, in this diagram, what is the direction of current element is? Is it J cap? Current element. We are talking about metallic cylinder. What is the direction of current element in the metallic cylinder? Sir, I cap, minus I cap. Minus I cap. Can you see the current element? This is the direction of current. This is the length of the cylinder. तो current element का क्या direction हो जाएगा? Minus I cap. And what is the direction of the magnetic field? Outwards. So what is that? That is K cap. Again, when I am using I, J, K cap, what I will do, I will always show X and the Y axis. Is that clear? So what is the angle between the current element and the magnetic field? Are you sure that theta is equals to? So sin 90 degree प्रियंका कितना होता है? इतने लोग प्रियंका हैं
क्लास के अंदर, मुझे आज पता चला। F इज इक्वल्स टू आई एल इंटू बी। क्या मुझे करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटेलिक सिलेंडर पता है? क्या मुझे लेंथ पता है मेटेलिक सिलेंडर का? क्या मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता है? तो क्या इन तीनों को मैं मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकता हूं? या जल्दी से कर लो। F इज इक्वल्स टू आई, कितना था, 2 या 3, तो आई था 3, लेंथ कितना था, लेंथ था 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -2, और मैग्नेटिक फील्ड कितनी थी, 1.2। दैट सॉल्व्ड विल गिव मी फोर्स एज 7.2 into 10 to the power of -2 Newton. Any problem? Fleming's left hand rule. Thumb points in the direction of force. This first finger, forefinger, magnetic field. The second finger, current, or the motion of positive charge. Here the charge particle is not there, so we are going to talk about the motion of positive charge. Is that clear? So in what direction we will talk about the direction of the current. Here there is no positive charge, okay? In which direction the current flows and in which direction the magnetic field is. The magnetic field is outward, so I put my finger outwards. Then what is the direction of the current? The current is flowing towards the negative x-axis. Can you see? So where does my thumb goes? Parallel to north direction. Am I clear? So the direction will be towards north, और ये डायरेक्शन को कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म्स में क्या कहते हैं, जे कैप। वाई एक्सिस के अलॉन्ग है ना एक्सेलरेशन, we need to calculate acceleration. Now for finding out the acceleration, what we need Newton's second law. According to Newton's second law, हमें क्या मालूम है, F इज इक्वल्स टू ma। तुम्हें रॉड के ऊपर लगने वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड पता है, तुम्हें रॉड का मास पता है, यहां से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फोर्स बाय द मास। किसका फोर्स, सिलेंडर की बात करें तो फोर्स एक्टिंग ऑन टू द सिलेंडर। व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन टू द सिलेंडर, that is 7.2 into 10 to the power of -2. What is the mass of the cylinder, 4 into 10 to the power of -2, 10 to the power of -2, 10 to the power of -2, cancel this out. Acceleration will be 1.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी होगा। So what will be the direction of acceleration? You can say as towards north or simply j cap. Is this clear? Okay, this ends the problem over here.